Bismillahirrahmanirrahim friends, I am Arif and this video I'm gonna show you how you can delete or deactivate your Twitter account permanently. So guys, इस वीडियो में हम सीखेंगे Twitter account को हम किस तरह से permanently delete कर सकते हैं या deactivate कर सकते हैं. So guys, let's begin without further ado. सबसे पहले जो है आप अपने Twitter account में login हो जाइए. मैं ऑलरेडी इसमें login हूँ, right? So I'm gonna delete this account permanently. So what you have to do, you have to go to more button and you can see here setting and support. So settings and support, click on there and again click on settings and privacy. So guys, you can see here your account. आप यहाँ पर देख सकते हैं guys, account information, change your password. If you want to change your passwords, you can change from over here. But what I am gonna do, I just want to deactivate my account permanently. So मैं चाहता हूँ कि मैं अपना account completely delete करूँ. What I have to do, I want just to click here and you can see this will deactivate your account. यहाँ इस स्टेप को फॉलो करने से क्या होगा, मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा. आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपका यूज़र नेम वगैरह ट्विटर पे नहीं आएगा. एंड यू कैन सी आल्सो व्हाट एल्स यू शुड नो. जब आप यू कैन रिस्टोर your account if it was accidentally or deactivated for up to 30 days after the deactivation. मतलब ये है कि अगर आप इसको अभी डिलीट करते हैं, डीएक्टिवेट करते हो, तो एक महीने के अंदर उसको आप फिर रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि मुझसे गलती से हुआ है. बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डीएक्टिवेट and we don't want to reactivate my account. So I'm just going to click over deactivate button, and what you have to do here, you will have to put your password of your account. So I'm going to put the password and I'm just going to click on deactivate. So the password was incorrect. Let me try again, and I'm going again to deactivate. So yes, this time I have entered the right password and you can see deactivated. So your account is deactivated. Sorry to see you go. Goodbye. So guys, hopefully आपको समझ आई होगी कि आप किस तरह से अपने अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. थैंक यू.